Hello everyone. Today the topic of our video is John Dryden, the father of English criticism and the voice of Restoration Age. We will discuss about life of John Dryden. Quotation of the day is, you will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. अगर अपनी लाइफ में आप कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो वो आपकी लाइफ कभी भी तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप अपने डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंज नहीं करोगे। जब आप अपने डेली रूटीन में चेंज करने लग जाओगे, छोटी छोटी चीजें उनके ऊपर देने लग जाओगे तो आपकी लाइफ है वो ऑटोमेटिकली ही चेंज होने लग जाएगी। नाउ वी विल स्टार्ट अवर वीडियो। John Dryden, the father of English criticism, the voice of Restoration Age. John Dryden, born 1631 to 1700, was one of the most influential literary figure in English literature. तो इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि जॉन ड्राइडन का जन्म 1631 में हुआ और इनकी डेथ 1700 में हुई। was one of the most influential literary figure, ये बहुत ही ज्यादा influential literary figure है। known as the father of English criticism, और इनको father of English criticism कहा जाता है। तो हमें क्या याद करना है कि फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसको कहा जाता है, तो जॉन ड्राइडन को कहा जाता है। His excellence as a poet, dramatist, translator, and literary critic, his writing shaped the literary standards of Restoration and Age and established principles that influence English literature for generation. Through his poetry, plays, critical essay, Dryden became dominant literary voice in the late 17th century. तो जो जॉन ड्राइडन है वो 17th सेंचुरी के एक बहुत ही ज्यादा मेजर फिगर है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। जॉन ड्राइडन वाज बोर्न ऑन अगस्त 9 1631 इन एल्डवाइन, नॉर्थ नॉर्थम नॉर्थम्पटनशायर इन इंग्लैंड। तो जो जॉन ड्राइडन है इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म एल्डविंकल, नॉर्थम्पटनशायर। थोड़ा सा नाम अजीब सा है लेकिन आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना। और इनका जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1631 में हुआ। He belongs to a well-educated Puritan family, a valued learning, intellectual growth. Dryden received early education at Westminster School, where he developed strong demand of classical लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो इनकी जो अर्ली एजुकेशन है वो कहाँ पर हुई? वेस्टमिनिस्टर स्कूल में हुई। अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, अर्निंग ए बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री इन 1654। तो बाद में इनकी एजुकेशन कहाँ हुई? ट्रिनिटी कॉलेज में हुई। जब मैंने बिगनिंग में अपना ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा चैनल है, इसका नाम भी ट्रिनिटी था। तो ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाया। His education exposed him Greek and Roman literature, which greatly influenced his literary style, critical principle throughout his literary career. Dryden's literary career begins during the period of political and cultural transformation in England. The restoration of a monarchy in 1660 created the new opportunity for writers, and Dryden quickly emerged as leading literary figure. His versatile allowed him to excel in multiple genres. He wrote heroic drama, satirical poem, political words, translations, and critical essay. His ability to adopt a changing literary political circumstances contribute significantly to his success and popularity. In 1668, Dryden was appointed poet laureate in England. तो ये हमें फैक्ट याद करना है कि जॉन ड्राइडन है ये पोएट लॉरेट कब बने? तो 1668 में बने। A position of recognized his literary excellence and national importance. He later became historiographer royal and further enhanced his status in English circumstances. Major works of John Dryden, Absalom and Achitophel, published in 1681. तो हमें ये नेम याद करना है, Absalom and Achitophel, और ये कब पब्लिश हुआ? 1681. This political star considered one of the Dryden's greatest achievement, written in heroic couplet. ये किसमें लिखा गया? heroic couplet में लिखा गया। The poem uses biblical allegory to comment on contemporary political conflict in England. The work demonstrates Dryden's mastery style, characterization, and poetic technique. Next work is MacLachlan, published in 1682. One of the most financed work, heroic poem in English literature. MacLachlan satirized the poem Thomas Shadwell. इसमें किसको क्रिटिसाइज किया गया? थॉमस शैडवेल को क्रिटिसाइज किया गया। और एक कब पब्लिश हुआ था? 1682 में पब्लिश हुआ। Through wit and irony, Dryden exposed the perceived and mediocrity in contemporary literary culture. His poem remain as outstanding example of literary style.
नेक्स्ट वर्क इज एनएस मिराबिल्स, पब्लिश्ड इन 1667। तो एनएस मिराबिल पब्लिश 1667 में हुआ। दिस हिस्टोरिकल पोएम, ये क्या है कि हिस्टोरिकल पोएम है। दिस हिस्टोरिकल पोएम commemorates significant events in 1666, including Great Fire of London and Second Anglo-Dutch War. The poem reflects national pride, demonstrated Dryden's skill in combining history with poetical expression. नेक्स्ट वर्क इज ऑल फॉर लव, पब्लिश इन 1677। ऑल फॉर लव का पब्लिश 1677 में हुआ। ट्रेजिक ड्रामा बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ऑल फॉर लव is often regarded as Dryden's finest poem. Unlike Shakespeare's broader treatment of subject, Dryden focused on intentionally on emotion, conflict, war, and love and duty. तो जो ऑल फॉर लव है ये एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है उसकी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें एंटनी और क्लियोपैट्रा की स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है। शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा की तरह इसको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं किया गया है, बल्कि इसमें किसको इंटेंसली और इमोशनल कंफ्लिक्ट बिटवीन वार एंड लव की जो लव एंड ड्यूटी है उसको इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है। नेक्स्ट वर्क इज एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, पब्लिश्ड इन 1668। This critical essay established Dryden as a foremost literary critic of his age. Throughout his dialogue among the four speakers, he discussed classical, modern drama, comparison of French, English theatre tradition, and essay remain as landmark in English literary criticism. Essay of criticism, essay of dramatic poetry 1668 में पब्लिश हुआ और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत ही ज्यादा फेमस वर्क है। इसमें चार करेक्टर्स हैं, उनके डायलॉग को प्रेजेंट किया गया है और जो चार करेक्टर है अलग अलग जेनर्स, अलग अलग लोगों को प्रेजेंट करने वाले हैं, जैसे कि मॉडर्न ड्रामा, फ्रेंच, इंग्लिश और इनको आपस में इनकी कंपेरिजन की गई है और जो यूजीसी नेट है उसमें से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन ऑफ Virgil, published in 1697. Dryden translation of Virgil's work, particularly ancient Aeneid, is celebrated for its elegance and poetic power. This translation had to make classical literature accessible to English reader and demonstrate Dryden's mastery of language. John Dryden as a literary critic. John Dryden contributed to literary criticism as significant as his achievement in poetry and drama. He believed that literature should combine artistic beauty with moral purpose. His critical writing promotes clarity, balance, order, and reason, quality associated with new classicism. Unlike many earlier critics, Dryden evaluated literature through practical analysis rather than rigid rules. His balanced approach laid the foundation of modern literary criticism and influenced later critics such as Samuel Johnson and Alexander Pope. Literary style and characteristics. Several distinctive features characterized by Dryden's writing in mastery of heroic couplet, clarity, precision, and balance of expression, effective use of style and irony, strong political and social commentary, emphasis on reason and order, elegant polished language, deep engaged with classical literary tradition. These qualities made Dryden the leading literary representative of Restoration and early New Classical period. Contribution of English literature. John Dryden transformed English literature several important ways. He perfected heroic couplet, elevated literary criticism. He respected discipline, produced some of the finest style in English language. His work established standard of style, taste, and domination of 18th century. As a translator, he brought classical mastery to English readers. As a critic, he developed principles that continue to influence literary studies. His ability to excel in multiple literary forms make him one of the most versatile writers in the English literature. Important quotation by John Dryden: "Beware fury of a patient man. Great wits are sure of madness near allied. Error like straw upon the surface flow. He who search for pearls must dive below. For those whom God ruin has designed, fits for fate and first destroy their mind." This quotation reflects Dryden's wisdom, wit, and keen understanding of human nature. Important examination point: John Dryden lived from 1651 to 1700, known as the father of English criticism. तो इनका जन्म 1631 में हुआ, डेथ 1700 में हुई। इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा गया है। एक लीडिंग लिटरेरी फिगर्स हैं ऑफ रेस्टोरेशन एज के, अपॉइंटेड पोएट laureate in 1668, mastery of heroic couplet, author of Absalom and Achitophel, Macbeth, and All for Love, wrote essay of dramatic poetry, landmark critical work,
major representative of neoclassicism, renowned poet, dramatist, and translator, influenced later writers such as Alexander Pope, Samuel Johnson. Now I reached that conclusion. John Dryden occupies a central position in the history of English literature. His achievement as a poet, a dramatist, critic, and a translator shaped the literary culture of Renaissance England, influenced generation of writers through the work of remarkable intellectual depth and artistic excellence. Dryden established standards that continue to guide English literature long after his death. His legacy as a father of English criticism and master of restoration literature remains फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन लिटरेरी हिस्ट्री। तो इस वीडियो में हमने जॉन ड्राइडन की बायोग्राफी को डिस्कस किया है और इसके जो मेजर वर्क है उनके नेम को डिस्कस किया है। इनकी जो डिटेल वीडियो मैं आपको आगे बनाऊंगी। तो आज की मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर करना और पॉजिटिव कमेंट को ज्यादा करना, नेगेटिविटी से दूर रहना और नेगेटिविटी से मेरे कमेंट्स को भी दूर रखना। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू।